Hi friends, once again, welcome to Electronics Lecture Series. We have been studying subtraction instruction. In last video, we have discussed how microprocessor can be used to subtract 8-bit number. But what if you were to subtract multi-byte numbers? So while subtracting, just as in case of multi-byte addition, we had there uh, that is a add with carry. Similarly, in case of multi-byte subtraction, we require a special instruction that is subtract with borrow, and you know that carry flag is used both for indicating the carry occurred, overflow occurred in addition and borrow occurred in the subtraction. So for that we require subtract with borrow instruction, that is SBBR, subtract with borrow register. Then we have subtract with borrow memory, and we have subtract immediate with borrow, these three instructions. And lastly, from this group, we have small but frequently required instruction, increment and decrement instruction. And one more instruction is there, that is decimal adjust accumulator, that is DAA. So let us study one by one. Friends, before going to multi-byte subtraction, let us consider one example. How do we subtract 3-digit decimal number from another 3-digit number? So, if you have, say, for example, 925 minus 647. So, these are this is the minus is a 3-digit number. This is 3-digit number. And how do we subtract this? We start from the least significant column. ये पहले कॉलम से शुरू करते हैं. 5 minus 7. माइन्यूएंट जिससे सब्ट्रैक्ट करना है वो 5 है और जो सब्ट्रैक्ट करना है वो 7 है. फिजिकली यू कैन नॉट टेक अवे 7 फ्रॉम 5. 5 से 7 नहीं निकाल सकते, लेकिन मैथमेटिकली निकाल सकते हैं. कैसे? 5 से 7 निकालना है तो ये वी टेक बोरो फ्रॉम हाइयर सिग्निफिकेंट कॉलम. इधर से उधार लेते हैं हम. यहाँ से उधार लिया तो 10 10 और 5 15 हो जाते हैं. 15 minus 7 that produces the 8, with the reminder that this particular digit here borrow has occurred. It has taken borrow 10. So keeping that 10 in mind, then you have to go further. For the next column, what we do? We subtract 4 from 2. Once again, you cannot subtract 4 from 2, and here also it requires the borrow. But while subtracting these two digits, you have to check whether borrow has occurred. जो उधार लिया था यहाँ, तो इसको यहाँ जोड़ना है. मतलब you subtract 4 from this 2 along with borrow. मतलब 2 से 4 निकलना है borrow के साथ. और borrow कौन सा फ्लैग इंडिकेट करता है? कैरी. We have seen that carry has two purposes. It indicates carry in addition, and it also indicates borrow in subtraction. For this column, we require subtraction of one digit from other digit along with the borrow. And the same way, we go for the next higher and higher column. If there are 4 digits, then you can take the 4 digits also here. In the same way, you can perform multi-byte subtraction using microprocessor, and for that you require a special instruction, that is subtract with borrow. So let us consider that. So the next instruction is, that is SBBR. See that mnemonic SBB. SB for subtract, B for with borrow, and what is to be subtracted? Small r, that is CPU register. And we have seen that subtract register with borrow, small r means any CPU register. R can be A, B, C, D, E, H, F, like that. And you can easily understand because we have studied just as in case of addition, the contents of specified register was added there along with the carry. But now here this is subtraction. The content of specified register are subtracted from accumulator, of course, along with borrow.
and whatever result is there, that is placed into the accumulator. And so what can be the different examples here? So you can have SBB, say for example, say C, R के जगह हमने C लिया, तो इससे क्या होगा? कंटेंट ऑफ रजिस्टर C are subtracted along with borrow. Borrow is indicated by the carry. These things are subtracted from the accumulator, and the difference, the result is placed into the accumulator. This is how you can use subtract instruction when your byte is in the CPU register. In the same way, if your data that is to be subtracted, here we have considered the number is in register, but many times and most of the times the number resides in memory. In that case, you will have to use SBBM. SBBM means subtract memory along with borrow from accumulator. Subtract memory along with borrow from accumulator, right? So here content of M means whenever there is a capital M, it is always pointed by HL pair. HL pair उसका एड्रेस देगा उस मेमोरी लोकेशन का कंटेंट along with the carry flag will be subtracted from the accumulator, and result is placed into the accumulator. See, this is the instruction subtract with borrow memory. That means content of memory location pointed by HL pair along with borrow is subtracted from the accumulator, and result is placed into the accumulator. So next environment is immediate data. SBI data. SBI, SB for subtract, S for subtract, B with borrow, and immediate data, I for immediate data, along with borrow from accumulator. Here also the 8-bit data gets subtracted from the accumulator along with the carry flag, and carry indicates borrow. As I said, carry has two functions. It indicates carry in addition, overflow in addition, and it indicates borrow in subtraction. So this is how you get result like this. Immediate data means the byte 2 of the instruction which is specified in this instruction itself. So data, 8-bit data which you give in the instruction along with carry is subtracted from the accumulator, and result is placed into the accumulator. So this is how there are three ways you can subtract 8-byte data from accumulator along with borrow, and that are required for multi-byte subtraction. For example, can have say SBI 95 hex. What does it mean? The immediate data is 95, that is given in the instruction. This 95 in hex will get subtracted from the accumulator along with borrow, and result is placed into the accumulator. So this way you can subtract the number of your choice from accumulator along with borrow. Now there are few instructions left from arithmetic group. These are very simple but very useful instruction. Let us consider them so that we can finish complete arithmetic group. So INR
small r. INR, this is the mnemonic short form acronym for increment. So increment register. The instruction is self-explanatory. That means content of specified register R is incremented by 1. Whatever is the content, that is 8-bit content, that is incremented. एक से बढ़ाना है. मान लीजिए for example register C has something, say that is a 26H, and when you say INRC, if this instruction is given to microprocessor, what it does, it increments it by 1. मतलब इसमें एक जोड़ना है, एक ऐड करना है, तो रिजल्ट विल बी 26 plus 1, that is 27 hex. This will be the result. Simply एक से इंक्रीमेंट करना. Okay, this is required फॉर काउंटिंग पर्पज. एक चीज़ हो गई, एक इवेंट हो गया तो उसको काउंट करेंगे. 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो इवेंट हो गया इंक्रीमेंट करो, इवेंट हो गया इंक्रीमेंट करो, उसलिए. सो व्हाइल हैंडलिंग द काउंटर्स वी रिक्वायर सच इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. DCR इसका उल्टा, इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट रजिस्टर. तो जो रजिस्टर हम यहाँ स्पेसिफाई करेंगे उसका कंटेंट 1 से क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा. सो 1 विल बी डिक्रीज, आई मीन subtracted from that register, and result goes to the, of course, in that register. This result doesn't go to the accumulator, remember. So for example, if you have register C, let us take some other example, register B as say 12 in hexadecimal, and you say decrement register B वापर रहे अपन यहाँ. सो डिक्रीमेंट करना है B को. तो अगर ये इंस्ट्रक्शन मिलती तो माइक्रोप्रोसेसर इसको बाहर आके क्या करेगा, 1 से कम करेगा. सो रजिस्टर B विल कंटेन आफ्टर डिक्रीमेंट B इट विल बी जस्ट 1. सो वेरी सिंपल, इंक्रीमेंट करो या तो डिक्रीमेंट करो. ये हो गया रजिस्टर के लिए. ऐसे ही 2 इंस्ट्रक्शन किस लिए रहेंगे, मेमोरी लोकेशन के लिए रहेंगे. तो वो इंस्ट्रक्शन क्या रहेगी, INR increment capital M, and you know that whenever there is M, it is pointed by HL pair. Increment memory, you just say increment memory, and whenever we say that it is a memory, it is a kappa pointed by HL pair. So content of memory location which is pointed by HL pair are incremented by 1 and it is kept there itself. वो मेमोरी कप्पे में ही रहेगा, सिर्फ उसके जो कंटेंट है 1 से इंक्रीमेंट में. दैट मीन्स व्हेन योर काउंटर जहाँ आपको रिकॉर्ड रखना है वो मेमोरी लोकेशन में है, तो ऐसे आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल HL इज पॉइंटिंग से C542 हेक्स. HL क्या दर्शा रहा है, C542 हेक्स, और C542 हेक्स में इस कप्पे में डेटा है मान लीजिए से 11. इस मेमोरी लोकेशन में डेटा C542 एड्रेस वाले लोकेशन में 11 है, और आप कहते हैं इंक्रीमेंट मेमोरी. तो इस इंस्ट्रक्शन का असर इफेक्ट क्या होगा, तो उस मेमोरी कप्पे में जो है उसको 1 से इंक्रीमेंट कराएगा. सो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन द कंटेंट ऑफ दिस मेमोरी लोकेशन विल become +1, that is 11 + 1, that is 12 hex. This is how your number can be in memory location and you can increment using this increment memory. इसकी उल्टी इंस्ट्रक्शन कौन से रहेंगे, उल्टे वाला रिवर्स ऑपरेशन, डिक्रीमेंट memory. And you can understand now DCR means decrement. Decrement memory, and memory means it is always pointed by HL pair. So content of memory location pointed by HL pair
is decremented by 1 and the result is placed into the chart. So whenever you want to keep record of something, event recording, add करना है, subtract करना है, एक से कम ज़्यादा करना है, तो you can use these two instruction, increment register, decrement register, increment memory, decrement memory. In the same way, we have one more instruction for increment and decrement, and that is INXRP. This is slightly different. IN for increment, X for some register pair is involved, and which register pair here you have to mention. So increment specified register pair, तो इसको कैसे रीड करना है, increment register pair. So whatever register pair you mention in the instruction, that is incremented by 1. See that this instruction is different than INR memory, increment memory and decrement memory. वहाँ मेमोरी लोकेशन का डेटा अपडेट होता है पॉइंटेड बाय HL पेयर, और यहाँ जो रजिस्टर पेयर में जो कुछ भी है 16 बिट डेटा, रजिस्टर पेयर मीन्स ये 16 बिट नंबर है, उसमें एक ऐड होगा. ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव HL में कुछ तो है, मान लीजिए 2531 HL मध्ये 2531 आहे, and if you execute the instruction NXH, see that increment register pair कौन सा, H माने HL पेयर, HL पेयर को इंक्रीमेंट करना है, तो मतलब इसमें क्या था 2531, सो अपॉन इंक्रीमेंट इट विल बिकम, तो HL में इस इंस्ट्रक्शन के बाद क्या आएगा 2531 प्लस 1 दैट इज 32, दिस विल बी द रिजल्ट. मतलब 31 था तो क्या आ जाएगा 2532. तो HL के कंटेंट जो 16 बिट है वो इंक्रीमेंट होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव से रजिस्टर पेयर BC में है 2693 ऐसा है, और आप कहते हैं इंस्ट्रक्शन देते हैं INXB, सी दैट BC पेयर है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, RP रजिस्टर पेयर की जगह क्या आ जाएगा B. सो इंक्रीमेंट रजिस्टर पेयर BC, तो इसका असर क्या होगा, रजिस्टर पेयर BC का कंटेंट 1 से इंक्रीमेंट होगा, तो 1 से इंक्रीमेंट 2693 का क्या होगा 2694 होगा. सो वेरी इजी. सो 16 bit number is incremented. So earlier in increment register and increment memory it was a 8 bit increment, 8 bit नंबर में एक ऐड होता था. इसमें क्या है, रजिस्टर पेयर में जो 16 बिट है उसको इंक्रीमेंट करेंगे, और इसका उल्टा इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, इंक्रीमेंट की जगह क्या रहेगा DCXRP. हाउ टू रीड दिस, decrement register pair, and you can understand now this is very simple now. The same way, only thing is that it is decremented by 1. The content of specified register pair is subtracted or decremented by 1 and result is placed into that register pair itself. So for example, let us take this itself. HL has 2693 and you are executing this DCXH. So there it was INX, here DCXH, decrement HL pair. इसको 1 से कम करना है, that's all, and the result will be HL will become 2692. So this is the effect. तो 16 बिट नंबर जो है रजिस्टर पेयर में जो मेंशन करेंगे उसमें उसको 1 से डिक्रीमेंट करना है, तो ये कर सकते हैं. द अदर एग्जांपल यू कैन हैव से DCX लेंगे, DCX मान लीजिए से BC और HL हो गया DCXD, मतलब DA में है
1 2 3 7 और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है DCX D. See that I am using D. The D pair is mentioned like this G. तो इसका इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीमेंट D का इफेक्ट, तो D में जो 1 2 3 7 था वो होगा 1 2 3 6 H. So this is how these are used for incrementing and decrementing the 16-bit number in a specified register pair. Then we have a last instruction from arithmetic group, and that is a DAA. DAA. And how to read this? Decimal adjust accumulator. This instruction simplifies actually BCD arithmetic. That means when we want to process decimal numbers, just as in case of calculator में हम डेसिमल नंबर एंटर करते हैं, मान लीजिए 47 एंटर करना है तो वी प्रेस की 4, देन वी प्रेस 7, तो 4 BCD में कन्वर्ट होके जाता है, 7 BCD. व्हाट इज BCD? बाइनरी कोडेड डेसिमल. तो BCD नंबर जाएगा, 47 + 12 किया आपने तो 12 भी BCD में जाएगा, और इसका एडिशन होके जो रिजल्ट आता है, सो वो जो रिजल्ट है 4 7 + 12, तो वो रिजल्ट आता है 7 + 2 दैट इज 9 एंड 4 + 1 दैट इज 5, वो भी BCD में चाहिए. सो यू आर हैंडलिंग डेसिमल नंबर्स. But remember that microprocessor can handle only binary. तो उसको नंबर्स बाइनरी में चाहिए और रिजल्ट भी बाइनरी में आता है, लेकिन हमें फॉर ह्यूमन बीइंग वी रिक्वायर द रिजल्ट इन decimal, and for that it has to be converted into BCD. What is this actually? These are decimal. डेसिमल ही है, मगर कैसे है? बाइनरी कोडेड. So in order to explain difference between binary and BCD, let us take one example. You have 25. You see, I am calling it is 25 because it is decimal number. How do we write 25 in binary? बाइनरी में लिखना है तो कैसे आता है? देखिए 0001 और ये 16 + 9 दैट गिव्स यू 25. तो ये बाइनरी में आता है, 8 बिट फॉर्मेट में लिखा है हमने 25. ये देखो ये 9 है और ये 16 है. 1, दिस इज 8 + 1 एंड दिस इज 16 9, दिस इज 25. 25 decimal, and this is in binary. And how do we write in BCD, binary coded decimal? This 2 is written as 0010 and this 5 is written as 0101. You understand? So this is BCD, binary coded decimal. देखो ये सभी तीनों भी फॉर्म एक ही चीज़ दिखा रहा है, लेकिन अलग अलग फॉर्म है. तो ये है डेसिमल डिजिट, ये है बाइनरी और ये BCD. तो हमें अगर BCD में रिजल्ट चाहिए जो बाइनरी में आता है, माइक्रो प्रोसेसर गिव्स बाइनरी, लेकिन हमें चाहिए BCD. इसके लिए ये इंस्ट्रक्शन डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर. तो करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है. आफ्टर द इंस्ट्रक्शन जो भी रिजल्ट आता है एट द एंड, जो इंस्ट्रक्शन के बाद सिर्फ आपको कहना है DAA, फिनिश. मान लीजिए आपने इंस्ट्रक्शन यूज़ किए, वहाँ प्रोग्राम है से मूव टू एक्यूमुलेटर M एंड यू आर सीइंग दैट ऐड B. इससे क्या होता पता है आपको? रजिस्टर B का कंटेंट एक्यूमुलेटर में ऐड हुआ, और इसके बाद जो रिजल्ट चाहिए तो आपको यहाँ सिर्फ क्या कहेंगे आप? डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर. ये इंस्ट्रक्शन आप प्रोग्राम में देंगे तो आपको रिजल्ट पक्का BCD में मिलता है. तो जब भी आपको BCD नंबर हैंडल करने हैं तो तब ये इंस्ट्रक्शन काम में आते हैं. So at this point we have finished all the arithmetic instruction. You go through this video
once or twice, 2 बार देखो, आपको सब समझ में आ गया. You take your example, your own example, and go through these instructions. You will understand. Friends, I hope you are following all the instructions. Today we have finished a very important group of instructions, arithmetic instructions. So from next time, we will meet with new instructions. See you next time. Bye.